हो माता धप धप मग पिता तुम्ही हो ग मग प मग रे सा. Here again the komal ga was used. ग मग प मग रे सा पिता तुम्ही हो बंधू. Now let the beginning note of the second line itself is very low. तुम्ही हो बंधू. So सा सा रे ग सा सा रे ग. कोमल th and komal ga, but the re is shuddh. सा सा रे ग तुम्ही हो बंधू सखा तुम्ही हो म ग रे सा सा म ग रे सा सा. ग and re is komal here. म ग रे सा सा. Now we will go to the antara. तुम्ही हो साथी तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे. So now the composition is inching towards tar saptak. So you can see the beginning is little higher than what was in the previous line. So this starts from the dha of the madhya saptak, komal dha of the madhya saptak. धम मधनी. My harmonium gets stuck. धम मधनी तुम्ही सहारे तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे. Now it's going in the tar saptak. सा 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 ni re sa 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 ni re sa. So the komal re in tar saptak is the highest note that goes into this composition. Dha ma ma dha ni sa 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 ni re sa. तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे कोई न अपना. So again the composition is going backward towards the lower octave. Ni ni dha pa dha pa ma